तर आता आपण चौक या गावातनं आतमध्ये शिरतो आहे. त्या मंदिराजवळ हाच रस्ता जातो का चंडिका देवीचं? Hello everyone, welcome back to the channel and I hope everyone is doing great. This video is going to be a different one. Unlike my other travel videos, this video is going to be a voiceover video entirely. Yes, right, behind that mountain our destination is, and this video is all about sharing that experience. So to cut short, मैं और मेरी वाइफ हम गए थे कल्याण किसी काम से. काम जल्दी ख़त्म हुआ तो सोचा कहीं नज़दीक के अच्छे लोकेशन पे फ़ोटोग्राफी करके आते हैं. वैसे बदलापुर, नेरल, मोरबाट, बारवी ये सब कल्याण से नज़दीक है एंड दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट सीनिक लोकेशंस. हमने पहले सोचा कोंडेश्वर वाटरफॉल जाते हैं बट वी केम टू नो कि वो बंद है. सो वी डिसाइडेड टू गो टू मोरबे डैम बैकवाटर्स. वेदर वॉज गुड, स्लाइट रेन वॉज एक्सपेक्टेड. येस, स्लाइट, बट जो बाद में हमारी वाट लगी वो वीडियो में आगे आएगा. वी वेर नॉट राइड प्रिपेयर्ड एट ऑल. नो गियर्स, नो विंड शीटर, नो जैकेट्स, नथिंग. बस हेलमेट्स थे. Now GoPro setup was like very simple. I had chin mounted GoPro, no case, no mic setup, nothing. ये जो आप wind noise सुन रहे हो हल्का सा, it's there because GoPro wind noise reduction option was set to auto and at this speed it did okay job. अभी ये थोड़ा हमें भगाना पड़ा बाइक क्योंकि पासिंग क्लाउड था और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी. You can spot that with the changing road conditions, but कुछ भी बोलो, roads were super awesome, no potholes, nothing. But seems like God of Rains had another plans that day. We encountered the rain, we stopped at one place, then thought to continue as intensity of the rain was not that bad. So now I'll stop this voiceover and we'll show you what happened afterwards. ऑलराईट, तर आता आपण पोचलेलो आहोत चौक या गावाजवळ. चौकमधनं आम्ही नेरळ साईडने आलो, म्हणजे आम्हाला चौकमधनं राईट मारावा लागला. मॅप तर तेच दाखवत आहे. कुठे खड्डा असेल कुठे नाही सांगता येत नाही. आजचा प्लॅन काही ठरला नव्हता, असंच आम्ही बाहेर पडलो आणि त्याचं गिफ्ट हे आहे अप्रतिम. त्या मंदिराजवळ हाच रस्ता जातो का चंडिका देवीचं? सरळ आहे ना? And I was looking at something else and suddenly I saw the map और तब तक ये गलत लेफ़्ट टर्न ले लिया था. बट देन सोचा कि थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि क्या है. मावशी, मंदिराजवळ कुठच्या बाजूने? चंडिका देवीचं मंदिर वरती जायचं का? अच्छा अच्छा अच्छा. So finally we did reach our destination. यहाँ से बाइक आगे जाता है कि नहीं, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट आप यहाँ पे बाइक साइड में पार्क करके देवी के दर्शन करके यू कैन टेक अ वॉक एंड कैन एक्सेस दी बैक वाटर्स. आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू विज़िट वन मोर टेम्पल. उस टेम्पल की ख़ास बात यह है कि 1-2 मिनट्स के वॉक पे यू कैन एक्सेस द बैक वाटर्स. बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी. बट जब तक हम वहाँ पहुँचे तूफ़ानी बारिश चालू हो गई एंड वी हैड टू टेक अ शेल्टर एट टेम्पल इटसेल्फ. दिस इज़ वॉट वी मिस्ड सैडली, बट देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. इसी सोच के साथ भीगते हुए ही सही पर वहाँ से प्रस्थान कर लिया.
For the last 6 to 7 years I have been using SJ Cam SJ4000 as primary helmet or action cam. This is the first time that I am using GoPro Hero 8 Black. I have purchased it in 2020 itself, and I must say it's an amazing camera. Its waterproof capabilities are damn good. I was wondering, will it be able to take the beating of heavy rain for that much time or not, but it did really well. और बस हम वापस रास्ता भटक गए. बाहेर जायचा रस्ता कुठे आहे? बाहेर जायचा रस्ता रस्ता कसा आहे? मेन रस्त्याला जायचं आहे तर इथनं खाली का? अच्छा, थँक्यू. रस्त्याला कुठं जातो? बाहेर जायला सरळ का? दादा बाहेर हा ना? Now, why I have decided to purchase TVS Apache? Well, it was a no-brainer for me, as it was my dream bike. In early years of my career, TVS Apache was first launched and I wanted to buy it then. I used to spend hours and hours reading about it, but due to some financial constraints I could not buy it. And after almost 15 years or so, I had decided to purchase a bike. And for me, the first love was the only choice. Apache 160 or 200 was the only confusion, but then I thought to stick to 160. Let's see how this journey goes on. I am more of like a car guy, more passionate about car driving, long drives. But if this bike riding clicks, then in future probably will love to own a Kawasaki, as owning a Kawasaki is another dream of mine. Let's see how it goes. For last 8 years I have been riding a scooter, Honda Activa, in the city for short rides like 400 kilometers to and fro. And this is the first time ever I was riding a geared motorcycle. I still consider myself an amateur when it comes to geared bike riding, and this particular experience riding in the heavy rain was something amazing and blissful for me. The Apache RTR is such a confidence inspiring bike. जाते वक्त हम यहाँ रुके थे और आते वक्त भी यहाँ रुकना पड़ा. यहाँ ब्रेक लेके हम निकल पड़े वापस. After 5 minutes of riding, there was no rain at all and 100 kmph could help us dry quickly. Then we took a small halt for a photography session. This video was unusual, unlike my other editing on the beat videos, but I tried to do something new. If you liked it, or maybe you did not, or any other feedback, please let me know in the comment section below. If you are viewing this clip right now, then I must say
Thank you so very much for watching it till the end. More importantly, please be safe. I hope this pandemic stuff gets over soon. Ride and drive safe, folks. Peace.